अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम इसी कम्युनिटी। वालेकुम एजाज अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज हमारे साथ एजाज साहब पहली दफ़ा जो हैं वो लाइव मौजूद हैं। एजाज साहब जो हैं वो ही इज़ द सीईओ ऑफ मैग्ना कार्टा कॉलेज। हमारे इसी कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स के एक इनिशिएटिव है एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज, जो हमने इन कोलैबोरेशन विद मैग्ना कार्टा कॉलेज जो है वो लॉन्च किया है। सो आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ वर्क्स के ऊपर, और उस फ्यूचर ऑफ वर्क्स के एलिमेंट्स को सामने रखते हुए हम फिर देखेंगे कि ईसी और ईसी कॉलेज के जो इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरह प्रेजेंट में और फ्यूचर में इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी को। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एजाज साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, अपने मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में, और एज अ डाइस्पोरा जब वो यहाँ से गए और फिर वापस आके पाकिस्तान के अंदर अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस हवाले से। नहीं ज़रूर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाम आपने मेरा बता दिया है। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय एजुकेशन इन अ बोर्डिंग स्कूल, अ पब्लिक स्कूल इन मरी, लॉरेंस कॉलेज। एक कॉलेज है घोड़ा गली में, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। एंड आफ्टर मैट्रिक आई जॉइंड आर्मी एंड आई सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 6 years। बट मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे फौज के लिए नहीं था, तो आई लेफ्ट आर्मी, आई वेंट टू अमेरिका and I had a couple of franchises in Domino's Pizza. जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ाई के साथ साथ मैं इस बिजनेस में भी घुस गया। And after that I completed my education in computer science from New York, and I worked for a year, and in 2017-18 I started my own college, which was called Magna Carta College, in partnership with my supervisor, who was my supervisor in my master's degree. एंड उनके साथ हमने कॉलेज खोला, और इंटरेस्टिंगली जिस जगह पे हमने ये आइडिया कंसीव किया, दिस वाज एक्चुअली एट Runnymede where Magna Carta was actually signed. So we named the college Magna Carta. We ran it for 4 years, and we were the first private college in 2009 actually, which launched the first online MBA program in London. And there were very few online programs at that particular time. So I'm perhaps were the very first few जिन्होंने किया. फिर I remain associated with two things: education at large and ed tech in particular, because जब आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए तो it's difficult to get back to the conventional methods. तो हमने उसके बाद we launched two initiatives. Both were completely online. One was called I Qualify UK, which actually offers professional qualifications online, and MCC, Magna Carta College, which offers university higher education qualification in association with UK University, जो हम उनके साथ मिल के ऑफर करते हैं. At present, we have 3 or 4 courses at MCC and a whole list of courses that we offer over there. लेकिन मेरे ज़्यादातर partners were British. When I say British, I mean English, born and bred there, and their interest, उनका पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, और मैं हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान आऊँ. 2015-16 में ऐसा हुआ कि I was able to acquire the majority share and I could actually call the shots, और हमने पाकिस्तान के अंदर एक इरादा किया कि हम आएँ और यहाँ एक इंस्टीट्यूशन खोलें. और ये इरादा हमारा primarily was looking at the demographics of Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान में एक youth bulge है which is actually expanding at present, और for the next 5-10 years it would be like that. and जिसपे बहुत politicians भी और लोग भी think tanks भी बात कर रहे हैं कि हमारी इतनी youthful population है, उनको हमने क्या करना है, किस तरीके से empower करना है, और किस तरीके से उनको convert करना है कि वो पाकिस्तान के लिए एक power potential बने. तो हमारी हद तक हमारा था कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट खोलें which should empower the youth in terms of education, of course, that you should have a reliable degree at an affordable cost, and also they should be able to get degrees, the skills which are prevalent in the market
एटलीस्ट इनटू द इंटरमीडिएट फ्यूचर, और उसके अलावा हम चाह रहे थे कि हम उनको तैयार कर सकें फ्यूचर के लिए, बिकॉज हम इस वक्त बाउंड्री पे हैं, कस्प पे हैं ऑफ सेंचुरी 21st, एंड द फ्यूचर चैलेंजेस आर इमेंस। और इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इमेंस लिटरेचर है। और उसी की बेसिस पे जब मेरी मुलाकात एक्सट्रीम कॉमर्स से हुई, तो आई वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड, बिकॉज दिस वाज एन इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो they do multiple things, but as far as their training part is concerned, they were making a massive contribution for the youth of Pakistan. और मैं ये देख रहा कि ये बाकी काम भी कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स टू देयर फैमिली एंड द सोसाइटी। तो उसको देखते हुए, और प्लस इनकी भी इस किस्म की विजन थी, हम बैठे और हमने कहा कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए कि जो हम जहां हम कन्वेंशनल एजुकेशन को तो देखें, करिकुलम को तो कवर करें, बट वी शुड बेसिकली top it up with skills which would enable them to contribute. तो उसकी बेसिस पे हमने ये कॉलेज किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वी आर in the second year, almost finishing the second year, because काफी टाइम हमें सेटअप में भी लगा. We are about to get hopefully the HEC permission as well, और sky is the limit. I mean, this is the start, और हम आगे we have a lot of plans जिसमें हम century 21st skills को देख रहे हैं, हम जो EC की skills हैं उनको देख रहे हैं. Plus we have a very good plan coming up in next 6 to 12 months for emerging technologies as well. कि हम emerging technologies के हवाले से भी एक ऐसा ecosystem develop करना चाहते हैं जो हमारी जो यूथ है उसके लिए बेहतरी के लिए साबित हो. इसके अलावा मेरा एक अपना एक इनिशिएटिव है जाती, इसको हम चंद हजार हम फीस लेते हैं. हमने फेडरल बोर्ड और वफाकी हुकूमत से उसको रिकग्नाइज कराया है, और उसमें भी हमारा मोटिवेशन यही है, एग्जैक्टली ये मोटिवेशन है कि हम बच्चे को पढ़ाएं, उसको अपस्किल करें और उसको 21वीं सदी के लिए तैयार करें. दैट्स व्हाट इट इज. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. साहब, ओवर टू यू. तो जी बिल्कुल. सो फ्यूचर वर्क से पहले एक और चीज़ के, जब आप कोलैबोरेट कर रहे थे एक्सट्रीम कॉमर्स से, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जिसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया ईसी की, और डाउन द लाइन नाउ एज अ पार्ट ऑफ द ईसी कॉलेज वो कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है? आज आप इधर मतलब कराची आए हुए हैं और आपने बच्चों से भी इंटरेक्ट किया है, और हमारे इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर के जो स्टूडेंट्स उन्होंने डिस्टिंक्शंस भी लिए हैं. सो और फिर जो आपकी परसेप्शन थी या आपकी अंडरस्टैंडिंग थी एट दैट टाइम और आज में कहाँ डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, बिकॉज फॉर द लास्ट 15 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द हायर एजुकेशन इंडस्ट्री, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर से भी है, कुछ मेजॉरिटी ऑफ इट इज इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल. प्राइमरीली ये सोच मुझे आई अराउंड 10-11 years बैक. मैंने एक बड़ा आर्टिकल पढ़ा, उसका नाम था एवलांच इज कमिंग. इट वाज नॉट एन आर्टिकल, इट वाज एक्चुअली अ रिसर्च स्टडी डन बाय KPMG, and it actually called an avalanche is coming in higher education. और उसको देख के मेरी थोड़ी सी सोच चेंज हुई. बहरहाल उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं सनी अली साहब से मिला तो उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको प्रॉब्ली हम कई दफा सोच चुके हैं, एंड एट टाइम्स इट गेट्स मिसइंटरप्रेटेड एज वेल, व्हिच वो लंगड़ी लूली डिग्री कहते हैं. तो उसमें primarily avalanche is coming. जब उन्होंने मैंने उनकी ये बात सुनी, तो I actually went back to that article कि यार ये मैंने बात ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये बात मैंने 8-9 साल पहले किधर पढ़ी थी कि ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. तो उसको देखते हुए there was a need, but the avalanche is coming actually wanted to say कि the nature of education has to change. और उसकी देखा देखी हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने की बुनियाद डाली, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि हम एक इन्फेंसी स्टेज में हैं कि हम पहला फेज या आधा फेज हम कर चुके, और इंशाल्लाह आगे 3-4 और फेजेस हैं, जब जाके हम अपनी तकमील पे पहुंचेंगे. जो हमारा विजन है उसको हम अटेन कर सकेंगे. एंड विजन इज एब्सोल्युटली सिंपल
Okay, we should have responsible contributing citizens who have a degree and who are ready to face the challenges of the future. क्योंकि जो nature of work है as we go ahead is going to change. And many a times आप सब ने जो सुन रहे हैं उन्होंने articles भी पढ़े होंगे, TV programs भी देखे होंगे कि आगे चल के आज से 5-10 साल पहले not just the nature of the jobs would change, ऐसे professions would be wiped out. जो आज professions exist करते हैं वो आगे चल के exist ही नहीं करेंगे. Over to you, Dr. Sir. So, मतलब बहुत से जो लोग हैं जिनसे हम फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं तो उनको लगता है कि फ्यूचर सिर्फ वो फ्यूचर है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसको हम मुस्तकिल करते हैं. लेकिन एकेडेमिया में तो नाउ फ्यूचर हैज इवॉल्व्ड एज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, जिसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास PhD पोस्ट डॉक्स हो रहे हैं. और फ्यूचर्स के ऊपर दे आर मोर देन 60 रिसर्च मेथोडोलॉजीज जिसकी बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. सो अब जो जब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क की, तो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ वर्क है क्या, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं. नहीं, बिल्कुल. मैं इस पे ये ध्यान तो देखें हमारे इस दुनिया में आई मीन जब मैं पैदा इंडस्ट्रियल एज थी, एंड इंडस्ट्रियल एज की उस रेवोल्यूशन की एक मियाद थी, एक उम्र थी, और वो पिछले 100 साल से चल रही थी. उससे पहले एक इरा था which was called agricultural age which went over centuries. उससे पहले एक और इरा था. Now the problem was this, that the moment we came into what is called today fourth industrial revolution, तो इसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा है. और हमारे देखें हम जब मैं मेरी एजुकेशन हुई स्कूल कॉलेजेस में, तो दे वांटेड टू प्रिपेयर मी फॉर अ रेपिटेटिव वर्क which is for industrial era, and to say this that I was not ready for the fourth industrial revolution, I won't be really wrong. And I see my colleagues from my school days struggling today if they want to get into the job market, and especially those people who have stayed in a single job and are retiring and trying to get into the job market. तो एक तो ये है कि जो लाइफ स्पेन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो बहुत थोड़ा रह गया, छोटा हो गया. एंड जो एजुकेशन है जिस तरीके से हमें कहा है वो उसके साथ से सॉरी प्लीज नहीं. सो कौन सी ऐसी चीजें जो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होंगी और वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नहीं है? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. मतलब हम जब जहां फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं वहां हम फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे होते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और उसके बाद जाके चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और फ्यूजन हो रहा है. आप एक ही डिसिप्लिन के अंदर जो हैं वो उस वर्टिकल के अंदर इनोवेशंस कर रहे थे. अब आके जो इनोवेशन हो रही है वो ब्लंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ऊपर हो रही है. मल्टीपल डिसिप्लिन्स में फ्यूजन्स हुई हैं, उनकी वजह से चीज़ें जो हैं नई से नई चीज़ें जो हैं निकल रही हैं. सो जो डिफरेंस है वो आज से 10 साल पहले और 10 साल आगे को आप कहाँ किस तरीके से देखते हैं, फोर्सी करते हैं इंडस्ट्री में? देखिए, again, I think looking right now beyond 10 years is going to be extremely difficult. हमने पिछले 5-6 सालों में we have seen there are a lot of things they have come and they have actually fizzled out. तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल technologies. It's not just one technology, and it's generally what we call today as the emerging technologies. तो उसके लिए भी देखें, again the thing is this कि the fourth industrial revolution एक तो fusion है, multiple technologies है और आजकल emerging technologies है. But to say this thing कि they're going to stay, it's not perhaps the right thing to say. What I actually mean by future of work is not कि fourth industrial revolution है और एक massive change है, that is there, but the skills that we require are actually not based on any technology or any particular skill. We're talking about lifelong learning rather than front-loaded education. We're talking about skills which would allow us to adapt to these changes or challenges that are coming up. And all of these skills that we are talking about today which are future skills, are actually soft skills.
Or I can give you an example that as of today, or for the last few years, Stanford, MIT, ISC, and there is a new institution called Halliburton. It is 5 years old. They don't teach anything apart from soft skills. They make you work on the project. It's experiential learning rather than anything else. And the skills that they are generally concerned with are the skills that are called 21st century skills, because they believe that these are the skills, the soft skills that are required for the people to actually manage the challenges of the world. And I mean, there have been surveys in this year, last year, in England, in America, and rest of the Europe, and the future skills that they have identified is किसी ने ये नहीं लिखा कि कोडिंग करनी है या कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हो, वो जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन the key skills that they have identified are soft skills. बिल्कुल. So हम बात करते हैं 21st century skills की कि there are some 21st century skills जो शायद आज जितनी रिक्वायर्ड हैं आज से पहले नहीं थी. तो आप इधर कहीं कोई बहुत छोटी पोजीशन पे मौजूद हैं या आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो ऐसी कुछ स्किल्स हैं अगर आप में होंगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आउटशाइन करेंगे. अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके अलावा आपके पास बहुत सी कॉम्पिटेंस मौजूद हो, रिसोर्सेज मौजूद हों, तो आप उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेंगे अपने मार्केट्स के अंदर. तो वो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं क्या? देखिए, हम जनरली जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली आवर टारगेट इज एक्चुअली द यूथ, हमारी यंग जनरेशन जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, हम उन्हीं की हद तक बात करते हैं. क्योंकि आगे जब हमने कहा कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हो रहा है, जब नेचर ऑफ वर्क जब एक प्रोफेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपने मुझे उस प्रोफेशन में चेंज किया है और आगे मैंने ट्रांजिशन करनी है, तो हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू दैट ट्रांजिशन if I'm not really prepared for it. So Century 21st skills is something which has been coined in America, in the West, and मुख्तलिफ frameworks में मुख्तलिफ definition है. And because हमने एक स्कूल लॉन्च किया है, उसमें हम Century 21st skills पढ़ा रहे हैं, उसके आने हमने फ्रेमवर्क हमने बोरो किया है. आई वोंट से कि हमने खुद बनाया है, हमने बोरो किया है फ्रॉम अमेरिका. इट इज कॉल्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स. उसके अंदर ये 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है. उसकी कैटेगरी 1 है द वे वी थिंक, एंड वी सेड दैट गोइंग फॉरवर्ड वी शुड be able to think critically, we should be creative, and we should be problem solvers. And communication and collaboration is the second category, how we actually work. And these are the 4 C's which are very important in Century 21st skills, which are creativity, critical thinking, communication, and collaboration. In today's world, all these 4 we will see that they're very, 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 very important. So in future, you would require education. I'm not saying, please don't get me wrong, that you would require education, but the education in terms of its nature has to change, where these critical skills are actually embedded in the curriculum when we are actually imparting education to these students. So these 2 categories. The third category is without digital literacy, it's not going to be possible. And both digital and information literacy, it's not going to be possible to survive in the future world. So we need a certain level of digital and information competence to survive into the future. So that is the third category. And fourth category is perhaps a bit more, it's underrated. Not a lot of people are actually talking about it. With every leap or every step that we take ahead in technology, it has an effect on the society, socially, culturally, and ethically. So we need to upgrade ourselves in these areas as well to meet the challenges of technologies as it actually advances. And we have seen recently, Pakistan में भी recently, I think उन्होंने एक और law pass किया है, and different people are looking at it differently, and especially from social media perspective. Privacy एक issue है, और इस तरह के बेतहाशा issues हैं. वर्क फ्रॉम होम आपने देखा कि उसका क्या इम्पैक्ट है और क्या नहीं आए हैं, रिटेल पे उसका इफेक्ट है. पर आई मीन दैट इज द फोर्थ कैटेगरी दैट वी टॉक अबाउट. बिल्कुल सही है. सो हमने 21st सेंचुरी स्किल्स में 4 C's को देखा, जिसमें से पहले जो
टू सीज हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, वो क्रिएटिविटी है, दैट इज हाउ टू थिंक, एंड देन दिस लास्ट फोर सीज, टू सीज हैं जिसमें कोलैबोरेशन है और कम्युनिकेशन है, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू वर्क एक्चुअली। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और मल्टीपल हमारे जो हैं व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन That's पाकिस्तान correct. जो है वो क्या है, उसके ऊपर मैं अपना एक व्यू पॉइंट देना चाहूँगा। उसके बाद जैसा मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपना देखें। अक्सर हमसे ये कहा जाता है, उसमें ये बात भी आ रही है कि सैचुरेशन बहुत आ गई हमारे पास जी ई कॉमर्स के अंदर, और बहुत से लोग भी आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो बिजनेस आता है, बिजनेस इकोसिस्टम्स के अंदर आता है, बिजनेस मार्केट के अंदर आता है, दुकान में नहीं आता। तो हर बंदा अपनी जो दुकान है वो एक ऐसी जगह पे खोलना चाहता है जहाँ या ठिया ऐसी जगह पे बनाना चाहता है जहाँ उसको पता हो कि मेरे आसपास भी वही मार्केट पॉपुलर हो। जैसे एक कपड़े की दुकान कपड़े की मार्केट में जाएगी, ज्वेलरी की दुकान ज्वेलरी की मार्केट में जाएगी, मोबाइल शॉप्स जो हैं वो मोबाइल मार्केट के अंदर जो है हो जाएंगी। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के एक इकोसिस्टम ई कॉमर्स का जो है डेवलप हुआ है। तो जो ई कॉमर्स मैं का इको इको और ई कॉमर्स का जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एग्जांपल्स नहीं मिलती। सो एंड वी गेट द क्रेडिट ऑफ इट कि सनी अली आए और उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। उससे पहले ई कॉमर्स एज अ फ्रीलांसिंग मौजूद थी, और वी हैव वेरी सम गुड नेम्स जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन वो जो इकोसिस्टम बनाना है वो एक्सट्रीम कॉमर्स से बनाया, एंड देन वी हैव माशाल्लाह मल्टीपल अदर पार्टनर्स जो कि सिमिलर स्लाइटली डिफरेंट मोड्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, जब आईटी का बूम आया था तो इंडिया ने वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था। देयर वर मल्टीपल रीजंस, लेकिन जो एक रीजन है वो ये था कि शायद इंडियन जो लेबर मार्केट है वो चीप थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान लेबर मार्केट एट दैट टाइम। इन 2022 अगर आज हम बैठते हैं तो डॉलर 180 के अराउंड मौजूद है। पाउंड्स में जो है उसकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं। हमारे पास आज सिटिंग हियर इन 2022 चाइनीज मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, जो आज से पहले नहीं थी। इंडियन जी मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, जो पहले नहीं थी। बांग्लादेशी मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, जो आज से पहले नहीं थी। सो पाकिस्तान के पास जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अगर हम लोग लो प्राइस पे आ गए हैं, अगर हम बेहतर क्वालिटी दे देंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, और वो जो बैक ऑफिस हब है ई कॉमर्स का वो पाकिस्तान बन सकता है। सो मुझे लगता है कि जितना लोग ई कॉमर्स में आ गए हैं इसके 10 टाइम्स और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो हमारा कंपटीशन आपस में नहीं है कि पाकिस्तान में सैचुरेशन आ गया। वी हैव अ कंपटीशन विद चाइनीज एंड विद आवर अदर नेबरिंग कंट्रीज, कि वहाँ हम compete कर सकते हैं। वी हैव कंपैटिटिव एडवांटेज। जैसे चाइना के पास कंपैटिटिव एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग में, कि वो मैन्युफैक्चरिंग में इतने लो कॉस्ट के ऊपर जो हैं प्रोडक्ट बनाते हैं कि स्केलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर लेते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में लो कॉस्ट के ऊपर अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और वन वी से कि नेबरिंग कंट्रीज दे आर मोर देन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर हम ये इस एरिया की पॉपुलेशन को जो मिला दें, तो इस हवाले से अगर क्वालिटी और वैल्यूज दो एक ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने फोकस कर लिया, हम अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरे हुए और वैल्यूज हमने अपनी क्वालिटी को बेहतर कर दिया, सर्विस क्वालिटी को, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट तो जो है वो बहुत मतलब हमने इंटरनेशनल मार्केट को अपने पास लेके आना है। यहाँ तो सैचुरेशन वाली बात नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट इजाज़ साहब? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, एक सैचुरेशन की द टू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एड्रेस हियर, कि एक तो सेकंड पॉइंट जो आपने क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, क्वालिटी पे किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और एक दफ़ा आप अपने क्वालिटी को इस्टेब्लिश कर देते हैं, बिलीव मी, यू वोंट इवन हैव टू कम्पीट ऑन द प्राइस। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी की क्लास ले लें, या टूल्स देख लें, या केस स्टडीज देख लें, whenever you are able to establish your quality, you can rule the market, you can demand the price for it. And simple to me, you compete on two things, either on quality, जिसको हम differentiation भी कहते हैं in business strategic terms, or you compete on cost differentiation. तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है।
कि quality के बगैर there is no way out, and especially because the world it has fused together. So I mean, I can be sitting in Africa and working in America or anywhere else, and we have just discussed collaboration and other things as well. So quality भी तो किसी किस्म का हमारा compromise, there are no shortcuts here. इसमें तो किसी किस्म की ये गुंजाइश नहीं है. But जो आपकी सैचुरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एक्चुअली डोंट एग्री इन इट. आई थिंक ये पहले भी हुआ है ऐसे कि स्प्रेडशीट आए, एटीएम्स आए. आई थिंक more and more, I think even in insurance worker, I think few years back, I was hearing that thousands of people have been laid down क्योंकि IBM Watson AI software है, उसने take over कर लिया है. But in a creative, and we have seen in ATM and spreadsheet example, it actually created more value into the economy, and that is the hallmark of creative and networked economy. So if you are able to develop an ecosystem, जो आप सनी अली की बात कर रहे थे, सनी साहब की, तो one that is established, believe me, half your work is actually done. There would opportunities arise from the corners and nooks that you haven't really thought about it. True. But it's absolutely important that we develop that ecosystem. And ये तो नहीं है कि हम लकीर के फकीर हैं और वो हमने इकोसिस्टम डेवलप किया है. तो जब इकोसिस्टम डेवलप करेंगे तो देयर आर अदर स्किल, इट वुड इवॉल्व. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि अगर आप if you do work in that kind of an environment properly, it would evolve, and it would evolve to your benefit rather than anything else. So I don't think कि saturation, yes, it appears, but आप ecosystem पे काम करते रहें, I believe it would create more value, and that is the hallmark of creative. जब हम future of work कह रहे हैं कि profession change हो रहे हैं, बंदे lay down हो जाएंगे, हम इसमें कोई बात नहीं कर रहे कि क्या ज्यादा value create होगी या value भी कम हो जाएगी. Till now, evidence show कि आपका जो value है in economy would in fact double. In certain case studies, they have spent 20 times more than what it is today. तो आपकी यूटिलिटी खत्म नहीं होगी उस तरह से. तो आई डोंट थिंक सैचुरेशन इज द पॉइंट. वी स्टिल शुड वर्क ऑन द इकोसिस्टम, एंड क्वालिटी इज द एब्सोल्यूट बॉटम लाइन. इसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. सो जब हम फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करते हैं एजाज साहब, तो नेचर ऑफ स्किल्स की भी बात आती है कि जो नेचर ऑफ स्किल्स हैं वो परपेचुअली चेंज होती जा रही हैं और आगे भी चेंज होंगी. सो आज से 10 साल पहले जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी, ये शायद वो आगे नहीं होंगी. तो वन ऑफ द एलिमेंट इज द टेक्नोलॉजी. लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं फर्दर, अगर वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही सही, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेचर ऑफ स्किल्स चेंज हो रही हैं, और आज हमारे बच्चों को किन ऐसे एरियाज पे काम करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर स्किल्स के ऊपर जो हैं वो अपने हैंड्स ऑन कर सकें और जो फ्यूचर पॉसिबल बिजनेस मार्केट है उसको कैप्चर कर सकें. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक इसमें हम थोड़ी सा पहले भी बात कर चुके हैं, और सिंपल ये है कि नेचर ऑफ वर्क इज चेंजिंग owing to the advancement in the technologies. Like for instance, AI, automation, autonomous vehicles, and other things. They're going to take a lot of jobs from the people. I think there was the book, The Key Lessons for 21st Century. I'm forgetting the name of this author. He's the same author who's written *Sapiens*. और उसमें, I think the very first chapter, he uses the word that professions would be wiped out and things like that. And he talks about medicine and nursing and other things, and robots taking over a lot of things. तो काफी सारी इस तरीके से जॉब्स जो हैं वाइट होंगी. तो the answer is this, that the nature of work is changing, and that change is being brought out by the advancement in the technologies. जब वो change हो रही है, then we have to reflect that what kind of skills that we require. At present, I would like to say that it is the skills that we talked about, the 4 C's in digital literacy and the ethical, how to adapt to these technological changes. These are the skills that we should be focusing on. And technology या digital literacy तो हमें चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है. Digital literacy is
part or and information literacy is part and parcel of the 21st century skills. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम इसी के साथ साथ, जैसा आपने पहले भी बात की थी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, जी हम उनको कहते ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले लोगों को शायद मालूम भी नहीं थी, या इनके नाम भी नहीं आए थे। उनमें से कुछ चीज़ें जो अभी बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुई और इवॉल्व हो रही हैं, और हम ये कहते हैं कि आगे जाके 2035 तक $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसके अराउंड रोटेट करेगी, और बहुत ज़्यादा एक जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसमें निकलेंगी। एक्चुअली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं क्या, उसका एसेंस है क्या, और वो क्यों इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसने भी फोकस करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू इनिशिएट some degree programs or some courses, बहुत से पाशा is working on it, and similarly हमने जो एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज है उसमें सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो भी लॉन्च किया है। तो इसके बाद में चलिए इसी के साथ पूछ लेता हूँ, तो वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है क्या, और सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हमारा क्या विजन है इसी के अंदर? ठीक है, मैं आपके लास्ट सवाल का आई वुड लाइक टू आंसर फर्स्ट। आई थिंक दिस इंस्पिरेशन आई गॉट फ्रॉम सनी अली, कि जब मैंने इनका ई कॉमर्स का ecosystem dekha, and I said that and believe it or not, I mean, I have been thinking about emerging technologies for the last 6-7 years, and we tried a couple of times, but we had a very lukewarm success in that. And हमारा इरादा बेसिकली यही है कि हम एक सिमिलर इकोसिस्टम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सिलेक्टेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर डेवलप करें, जिसको हम जिस तरीके से इसी अपने इकोसिस्टम को लेके चल रहा है, उसी तरह हम इसको भी आगे लेके चलें। तो आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी, आई थिंक ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं क्या जिनको हम बात करते हैं, जिनको अच्छा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली आई थिंक it's a list of technologies, and different where there are different technologies. I'll just count the top 6 or 7 emerging technologies which would have impact on every aspect of our life. One is AI, artificial intelligence. The other is machine learning and deep learning, which is exactly the same. Then you have blockchain. You have IoT, and we have seen metaverse or augmented reality or virtual reality. And I've mentioned blockchain, intelligent vehicles, Internet of Things. So these are 6 and 7 top emerging technologies. But this list is quite vast and is as big as 50 different technologies that have been identified as emerging technologies. और आप already इसको mention कर चुके हैं कि and there are studies which identify each of the emerging skill and how big an impact it would have on the economy. And I think you mentioned a figure of $50+ trillion in next 7 to 8 years. ट्रू। सो एक और जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि बिल्कुल एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो एजुकेशन ने भी चेंज होना है, और एजुकेशन भी रीशेप हो रही है। वन ऑफ द एलिमेंट, डॉक्टर साहब के पास आवाज नहीं जा रही। एजाज साहब, आवाज आ रही है आपके पास? ओके, सो वन ऑफ द एलिमेंट इज, कंफर्म कर लें उधर से, जब आए तो मुझे बता दें। जी, शायद एजाज साहब की तरफ से इंटरनेट का चैलेंज है। एक इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जब हमारे पास इंडस्ट्री रीशेप हो रही है, तो हमारे पास इंडस्ट्री की रीशेप होते होते जो एजुकेशन है वो भी रीशेप हो रही है। हमारे पास जितनी लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या नॉर्मली ग्लोबल जो कंपनीज हैं, उन्होंने तो क्वालिफिकेशन पूछना भी ख़त्म कर दी है। तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन द स्किल्स एज कम्पेयर टू कि आपकी जो है वो क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्या है। सो एजाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, प्लीज़।
ठीक है। सो हम एक बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे जैसे जैसे इंडस्ट्री रीशेप हो रही है, चेंज हो रही है, हमारे पास जो फ्यूचर ऑफ वर्क प्लेस है, फ्यूचर ऑफ जो जॉब है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि शायद आज जो बच्चा पैदा हो रहा है या वो स्कूल जा रहा है, जब वो इंडस्ट्री में उतरेगा तो जो जॉब्स उस वक्त उसको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होंगी। तो इस हद तक तेजी से जो है वो जो फ्यूचर ऑफ वर्क है और जो फ्यूचर ऑफ जॉब है, वो चेंज हो रहा है। सो हैविंग सेड दिस, जो एजुकेशन का रिलेशनशिप है उसके साथ देखें, अगर ऐसा है तो फिर तो कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि आगे जाके ऑब्सलीट हो जाएंगे, और कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो आउटशाइन कर जाएंगे। जिनको ये पता है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, वो तो शायद कोप कर जाएं, और अगर उन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया हुआ है, और जिनको नहीं पता कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है तो है। जैसे पाकिस्तान में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एचईसी का जो चैलेंज है, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो चैलेंज है, जिसमें अब इसी कॉलेज भी मौजूद है, वो एक्सीलेंस नहीं है, शायद वो रेलेवेंस है। कि आपने एक फील्ड को पढ़ाया, उसके अंदर आपने डिग्री स्टार्ट की, आपके पास सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा मार्केट में जाता है और मार्केट में उस जॉब ही नहीं है, और वो कहते हैं ये तो ऑब्सलीट हो गई है। और नहीं, उसमें काफी एब्सोल्युटली। बड़ी बड़ी ऐसी डिग्रीज हैं जो आगे आ रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है। सो ये कहना भी मुश्किल है कि वो कसूर बच्चे का है, या वो इंस्टीट्यूशन का कसूर है, या वो फोर साइटेडनेस नहीं है, या मायोपिया है, या क्या चीज है। तो एक तो ये एलिमेंट है। लेकिन उसमें, सॉरी। So there are two questions, अगर मैं कमिंग टू द पॉइंट, there are two questions। एक तो एजुकेशन कैसे रीशेप हो रही है, और इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट का क्या रोल है और उसको क्या करना चाहिए। Okay. I think in last week, Dr. Tariq Benori का, I think यहाँ ही लिटरेचर फेस्टिवल था, I don't know if you have gone through it, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स are neither producing good students nor they are producing good citizens. True. So this is a damning remark coming from right from the top. Dr. Tariq Benori, he is the chairman of HEC, where he should be answering a lot of questions, but I think he was brave enough to actually admit कि इस वक्त पाकिस्तानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपना काम नहीं कर रहे. Now it's a very difficult question, and we have to see in the perspective of Pakistan. And I think when he was actually saying, because मैंने उनके ये remarks social media पर पढ़े और उसके नीचे मैंने लोगों के comments पढ़े, what I felt was this, that nobody understood कि वो exactly क्या कहना चाह रहे हैं. किसी जगह किसी ने कहा कि टीचर की क्वालिटी बेहतर कर दो, किसी ने कहा कि ज़्यादा रिसोर्सेज दे दें, या किसी ने कहा कि पैसे ज़्यादा होने चाहिए. The key thing that Dr. Benori was actually pointing out was a change at the policy at the state level for higher education institutions. And one of the things he actually said it was the independent of the higher education institutions. So they should not, and they should not be under any bulwark, that they should be able to work independently and do it. एक तो ये है कि हमारे फ्रेमवर्क में तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. जो आपने कहा तो हमारे चेयरमैन ने ये कह दिया कि हमारे इस वक्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे. तो पूरी दुनिया में ऐसा है. The nature of education is changing, and nature of higher education especially is actually changing, and that's why we repeat the things that we have said, that there are universities who are changing with this change. आप MIT में देख लें, they're going towards experiential learning, they're going towards lifelong learning rather than front-loaded education. They're going, rather than a linear pedestal for education, they're going for a very chaotic form of learning, where you discover, you experiment, you go back, you prove the results, and that kind of an education that you're actually looking at. So पूरी दुनिया में उस लिहाज से ये एक change आ रही है. It's unfortunate कि हम अपनी हद तक इसको कुछ नहीं कर सकते. जो एक आपका क्वेश्चन था कि who is responsible, so it is absolutely students का क्या कसूर है. It is the state responsibility to provide
the right atmosphere and the right platform to the students, so they can actually excel and meet to compete, if nothing else, compete at the international level. जो हम नहीं कर रहे, we are not actually enabling them at that level. Or actually, if you really look at what Dr. Tariq Banori said, it actually endorses institutions like ECC. So we're doing quite opposite of what the Traditional most institution. guys in this country are actually doing. So we have a focus on education as well, but we have a different kind of a focus, and we are developing other skills along the way. And we might not be at the optimum level, but at the end of the day, we want a project-based experiential learning for our students, and with the skills and technology, they can meet the challenges of the future. True, very true. So जो स्टूडेंट्स हैं अगेन, या हमारी जो पोटेंशियल यूथ है, उसने अगर फ्यूचर को फोरसाइट करना है मार्केट पोटेंशियल के हवाले से, तो कौन सी टिप्स हैं दो तीन जो आप उनको देना चाहेंगे फाइनली? देखिए, मेरी टिप्स दे आर क्वाइट सिंपल. एक तो देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ. जिंदगी में किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं है. तो दे certain level of devotion, certain level of integrity, certain level of hard work is absolutely required. There are certain skills which are universal. The gauges of life would change, but they would stay the same. मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है, तो उससे आपकी किसी किस्म का छुटकारा नहीं है. ऐसा शख्स जो फोकस्ड होगा, जो जिसमें पेशेंस होगा, जिसमें इंटेग्रिटी होगी, जो हार्ड वर्किंग होगा, sooner or later he or she is going to excel. So these are absolutely universal and there are no two ways about it. इसमें कोई बिल्कुल. और जो फ्यूचर में एजाज साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं, वो कैसा देख रहे हैं? घरों में देख रहे हैं, इंक्यूबेटर्स में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं, पार्क्स में देख रहे हैं? बिल्कुल. I believe कि I see them in incubators or similar places where you're looking at. देखिए, अभी हमने एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दी, हॉलबर्टन की, जो नई यूनिवर्सिटी है और जस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है. इट वर्क्स लाइक अ इंक्यूबेटर, कि वो वहाँ पे कोई ट्विटर के शेल पे काम कर रहा है, कोई और इस किस्म की बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है. इट्स बेस्ड इन सिलिकॉन वैली, नोवेयर एल्स. और वो कोई डिग्री नहीं दे रहे, पढ़ा रहे हैं. द थिंग इज दिस कि हमारे लिए देखिए, हम यहाँ इक्वेट कर देते हैं एजुकेशन विद डिग्री एज वेल. They are imparting education, they are imparted learning, there's no doubt about it, but this is an institution which doesn't have a charter. उनके पास कोई डिग्री अवॉर्डिंग पावर्स नहीं है, मगर वो एक अपना एंडोर्स जरूर करते हैं, वो अपना ठप्पा जरूर लगाते हैं कि जी कि ये बच्चा हमारे पास 2 साल लेकर रह गया है. और तमाम बच्चे जो 2 साल वहां रह कर गए हैं, डिग्री नहीं ली है, they're getting into 6-figure salary straight away, day one. And they're so confident, that they are not charging any fees. वो कहते हैं कोई फीस नहीं है, you come study us for 2 years, and once you start earning, you revert a certain percentage of your salary, I think which is 12-13%, I'm not sure of it, वो आप हमें 3 साल तक देते रहे. So that is the level of confidence that they have कि वो करें. And they're not teaching conventionally. तो हमें अपना कन्वेंशन यूनिवर्सिटीज को चेंज करना पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे the things echo at times in the industry. So we have a lot of universities, we have a lot of IT graduates, but we do not have sufficient skills to meet the challenges as of today. And हम Century 21st skills emerging technologies को launch करना चाहते हैं. At times we feel massive challenges in terms of resource in the country to actually take it ahead. तो हम तो उस स्टेज में कि हमारे पास पढ़ाने के लिए लोग नहीं आ रहे इस वक्त, और हैं भी नहीं इस लिहाज से कि हम अपने यूथ को ट्रेन कर सकें. तो massive changes at rudimentary level are required at the HEIs to actually meet the challenges of the future. There is no doubt about it. And there couldn't be a better ambassador than the चेयरमैन HEC himself. उसने परसों कहा है ये कि हम ना अच्छे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, ना अच्छे शहरी बना रहे हैं. तो सिंपल सा सवाल है कि चेंज इज मस्ट. कुछ ना कुछ तो करना है.
Very true. Very true. Very true. Thanks a lot, Ejaz sir. Thank you Thanks for very much. sparing your time. Thanks for coming right here at the Exchange Very Commerce happy. Head office. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you for having me. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम.